અને શૈતાનની હંમેશા મહાજીવન માટે યોજના એ જ રહી કે માહલ કોઈક રીતે તે વિશ્વાસમાં કમજોર પાડી દે, જેથી કોઈ જેવા દેવા જે મહાન કામે હતે તે મહાન કામે તો ના એ શકે માહું. અને ત્યાં હાટી તો પ્રયત્ન હંમેશા અંધકારને શક્તિના રોતા. જો દવાખાનામાં હતો તો મેં અહીંયા દરરોજ મા ગામવાળી મા હાટી હોસ્પિટલની અંદર ગુડગાવીને મા હાટી પ્રાર્થના કોઈ, ઘૂંટણોની પ્રાર્થના કોઈ, અને આંસુ સહિત મા હાટી પ્રાર્થના કોઈ. અને રોજ તે બાઇબલ વાંચે. અહીં જ્યાં ખાટલામાં પોળો રહો મા ગાડી બાઇબલ વાંચે. મા હાટી તે રોજ હાથ ધોઈને મા હાટી પ્રાર્થના કોઈ. એ હંમેશા માન્ય આધ્યાત્મિક વાતાવરણ હોસ્પિટલમાં બીમાન મળ્યા. અને પ્રભુના કાંઈક સેવક એ ભલે કરોના કાળ હતો પણ ઓડા બી સેવકમાં દેખ્યા. જ્યાં સરકારી નોકરી કોઈ સુરતની અંદર કાંઈક પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હતા, કાંઈક મેડિકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હતા, તો હોડા વ્યક્તિ બીમાન એ માં ઓલી ગંભીર બીમારી છતાં બી આમી જ માએ યોગ સુરત પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હે. અને પ્રભુનો સેવક હે ત્યાં માએ કાંઈક દિહા પહેલાં ત્યાં માવે ફોન એનો માએ ત્યાં લાખ્યા સાહેબ આખું જોવે કોરોના હતો અને માહ કોઈને બીએ બીમારી કોઈને બી હતી, ભલે પત્ની રહી કે પતિ રહી ત્યાલ બી તી સ્પર્શ કોરા હાટી પ્રયત્ન નહીં કોઈ યા હાટી કા એલા બીમારી માન લાગી જાય. મતલબ માહાલ પોતાનો જીવ ખૂબ પ્રિય હોઈ ગયેલો હતો. ત્યાં હાટી કદલ બી મોનો નહીં ગમી રહેલા હતા. અને ત્યાં હાટી જ માહું ત્યાલથી સ્પર્શ કોરા હાટી બી ખૂબ મતલબમાં ત્યાલ એલા લાગે કે અહીંયાને સ્પર્શ કો તો હારો પેન ઓ પ્રભુનો સેવક એ અને હંમેશા માન બેટી પડે. અને મહાન બેટીની પાસે મા હાટી પ્રાર્થના કોઈ. જ્યાં જમા બીમારી તે જ્યાં તમારી તકલીફ ત્યાં હાથ થોઈને પ્રાર્થના કોઈ. અહીં ત્યાં પ્રભુના સેવક આખું કા તુમાઈ ખૂબ મોટો પ્રેમ માન દેખાડ્યો. આખું જોવે હું મતથી બીરોલા હતા, કરોનાથી બીરોલા હતા, તો હવે તુમ્હા મન સ્પર્શ કોતા બી તુમ્હાલ નહીં બી આયે તેમાં હે મને આખ્યા આપાલ જીવતો દેવ મિલો કાંઈ ના બીવું. હા, જે દેવ જીવતો હોય, જો આપે હાટી અદ્ભુત કામ કોરા હાટી અથવા જો દેવ આપે જીવનમાં મહાન મોટે કામ કરી રહેલો હોય અને જ્યાં આપણા વિશ્વાસ કરેલો હોય તો ખુદ જીવતો હોય તો કાંઈ ના આપણા મોતથી બીજે. અને ત્યાં વિશ્વાસ સાથે અહીં ચાલ્યો અને એ રીતે અહીં તમે હાટી પ્રાર્થના કહું એ ગોઠતીમાં નાખી. ઘણી વાર આપે જીવનમાં એવો ભય હોય, એ બીક આપે જીવનની અંદર હોય. પ્રિય બહાબો હોય અહીં બી જોઈએ ઓપરેશન જાય અને ગો એનો યોગ રાતી હોડા જાય માં મુયા ઓપરેશન કોલા હતા અને આખો મુંમાં ટાંકાથી હિવલા હતા, અંદર આખે ટાંકે દેલા હતા. એની રીતે અહીં વિશેષ નહીં બોલી શકું હતો અથવા તો ખાઈનું એક તકલીફ તો આથી જ માન. અને એ રીતે પેન છતાં ઘણીવાર હોડા લાગે કે કાયો પ્રશ્ન બી ઉસમાં લાગે કારણ કે માં દાતા એના યોગ બાગે લગભગ પાછાડે બેન દાતા હેતામાં એ પાને એટલે ત્યાં દાતા હમ બી સડો ચાલુ હોઈ ગયેલો, ચામડી હેકે જ ખરી પડે. ને ત્યાં અહીં બી વાઈક વ્યથિત હતો કે એ કોહડી પ્રકારની બીમારી રી કાયો રી કહા હોડા જેલા ઉસબે હે અને દાંત ત્યાં મેળે બાદો અંદર નહીં કે નીંગતો રહ્યો હોડા મતલબ હોડા બધા ઉસબ્યા કોઈ. એટલે અહીં ઘણી વાર પ્રશ્નમાં રહું. યોગથી રાતી અહીં નીંદમાં હતો અને મધ્યરાત્રિ હતી ને અચાનક અહીં જાગી ગયો અને જાગી ગયો એટલે માં તાળવામાં અહીં જીભ ફેરવું અને મન હે કે લાગ્યા કે માં તાળવાની અંદર યોક વાહનો હોલ પડી ગયો હે કે મન લાગ્યા અને અહીં એકદમ ગભરાઈ ગયો અને પાસે શેતાનમાં પરીક્ષા કોતો લાગ્યો. મન કયા ખે ખબર કા તું મહાર મોઈ જાય, કયા ખે તું મહાર મોઈ જાય. એલા જે શીખલા હેલા આમી મોટા હોઈ જાય ને તું હા નહીં લેવાય ને તું મોઈ જાય. ઓડા વિચાર શેતાનામાં મનમાં ટાંકી દેના અને અહીં પળવારને માટે ખૂબ ગભરાઈ ગયો અને ઓહળી પરિસ્થિતિની અંદર અદ્ભુત પ્રકાશમય એમાં જીવન અંદર ઉઠી બોઠો અને ઉઠીને ઘૂંટણ ભાઈ એ ના પ્રાર્થના કોતો લાગ્યો તો દેવમાં નાખે હે તું એલી વાચાયેલ કાલા હોનાતો હો, તું એલા અવારજાલ કાયલા હોનાતો હો, માઈ તુલ વચન દેનો તુલ વાયદો કોઈ હો કા તું મોહી નહીં પણ દેવનો તું મહિમા પ્રગટ કહો, તું માં વચન હોય વિશ્વાસ કહો. અને તરતું જ મેં દેવા ગાડી માફી માગી, પ્રભુ એમ ક્ષમા માગતા હું ચાહે કાંઈ બી બીમારીમાં જીવનમાં હે પણ પ્રભુ ઓલ તો જાતા હું તો એમાં વાયદો કોઈ હતું નહીં મોહિત પ્રભુ અહીં નહીં મોનારો હે. અને યોગ કલાક સુધી અહીં ઘૂંટણીને પ્રાર્થના કોતો રહ્યો અને અદ્ભુત દેવા શાંતિ ને સામર્થ્યનો અહેસાસમાં ખોયો અને મન મહેસૂસ જાયો કે અહીં જીવી. હાલેલુયા. જોવે આપણા કંઈક ઓડી પરિસ્થિતિમાં ને પસાર હોતે ને તો આપણે જીવન અંદર અવિશ્વાસ જે લાગે, ખૂબ હોડા મહાલો હોય જીવનની અંદર. વિશેષ કોઈ જી હું બીમારીમાં જીવન જીવે ને ત્યાં લે કે લાગે કે અહીં કોવે હારો હોય ત્યાં હોડા લાગે કોવે મહાટી હોડા હારા ધી કોવે અહીંયા મને બાની ઘી કોવે અહીં હારોસ બી. માં બીમારી 3 મહિના ચાલી, 3 મહિના એટલે માહલ હે કે લાગે કે કોવે પોતી જાય. મતલબ ભાઈ ભયંકર પીડા સહિતના જીવન. આખો શરીરમાં રિકવર હોતા મને 100 મહિના લાગ્યા. પ્રિય બહાબોહી
જો આપ હાલ ઓહડા લાગે આપે જીવન તો હવે કાંઈક પરિસ્થિતિ મતલબ જો થોડી આપે જીવનમાં એ તો હવે तुम्हारा आखा मांगता हूँ कि यो कुछ बाबत आपे जीवन माटे हिम्मत ने बळ लेनी है ती है परमेश्वर नो वचन है बीजा कांई ज नहीं माहू बेन शब्द कदा दिलासो देन जाता रही शके है अने त्या हाटी जो देवनो आत्मामान गीत लिखाटी प्रेरणा को होय तो वे देव ते परिस्थिति मान टाके है का जेथी कोईने ओहड़ा लोक या दुनिया में जीवन जीवी रहेला है का त्या जीवन माटे आ हिम्मत न प्रोत्साहन कारण बनी शको या शब्दनो उद्गार कह के नहीं शके त्या पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य द्वारा ये शक्य है का जेथी कोई ज्या लोक दुख ने पीड़ा में जीवन जीवी रहेला था ज्या लोका जीवन में भयंकर होड़ा प्रश्न था त्या लोक ये परिस्थिति में बहार नहीं शके अने त्याटी ज देवनो आत्मा ये रीते परिस्थिति में टाकीने ते प्रेरणा ने दोरवणी दे है हालेलुया हालेलुया अन चौक्कसपणे विश्वास को था काका जोवे देव आपाल ये परिस्थिति में टाके है ये परिस्थिति में आपाल पसार को होय अयुबना जीवन अंदर भयंकर परिस्थिति आती ते पोताना डोळहा कोईन पोताना डोळहा कोईन ये परिस्थिति देखी थी त्या प्रत्येक पोहो या धरतीवर जाता रह्या योग भी नहीं रह्या बादेस पोहे मोई गए त्या पाय जोला ढोर आता त्या बाधा ढोरडाक मरी गया त्या पाय कांईज नहीं रह्या ऊंट आते अथवा त्या पाय गोदड़े जी भी आता त्या पाय ती तमाम त्या गौमने आखी प्रॉपर्टी ओलहाज नहीं आखरे त्या गौ आता ती गौ भी पड़ी गया आप जो अयुबना जीवन संबंधी अभ्यास कोते हैं तो आप हाल काय माज पड़े आई जो बीमार आतो तो वारंवार अयुबनो जीवन आया इतकू याद को प्रिय बहु यह साक्ष्य या हटी उभे को मैं लियो पवित्र शास्त्र बाइबल में का जेथी कोई त्या जीवन थकी देव तुम्हें मारे वातचीत कोई शके का तो हिम्मत ने बळ दे शके देखा अगर आई अयुबना जीवन में काम कोई सकता हूँ तो तुम्हें जीवन में भी आई काम कोई सकता हूँ हालेलुया अगर आ अयुबना जीवन में ये आशीर्वाद दे सकता हूँ ते भले बद्दांच गुमाई देना त्या जीवन में कांईच नहीं रहा पण त्यार पासे देवे त्याला उत्तम प्रकार आशीर्वाद त्याला भरपूर को होयो तुम्हा अगर खाली भी हो जा तुम्हें पास कांईच भी नहीं रही पण माय में क्षमता है कांई तुम्हाला भरपूर प्रकार आशीर्वाद दे सकता हूँ प्रत्येक माहू जे देव विश्वास को त्या हाटी या आशीर्वाद है प्रिय बहाबो है मैं देखिए दुनिया में खूब लोग निराशमय जीवन जीवता त्या पाय बादंज रो होय पण जीवन में शांति नहीं रही भले त्या पैसा पाथारेम भी होता हो रही बैंक में त्या करोड़ रुपया बैलेंस भी हो रही खूब जगह त्या प्रॉपर्टी भी ले राखी हो रही गो में होना चांदी कहीं कमी नहीं हो रही पण छता भी माहू या दुनिया अंदर सुख चैनती नहीं जीवी रोला है या कारण हे का जीवन रहस्य ती नहीं समझी सकला है अने त्या हाटी ते वारंवार चिंतामय रहोय त्याटी प्रभु क्रिस्ते बहुत स्पष्टपणे आख्यो का तुम्हें जो जीवन है धन दौलत में नहीं है अने हे भी आख्या का तो भी माहू बेन मालिकनी भक्ति नहीं कोई शके काका अगर ती बेन मालिकनी भक्ति कोरी तो योका मालिकाल ती खुश कोरी अने बीजा मालिकाल ती निराश कोई देरी अने त्या हाटीज प्रत्येक माहू त्या योग मालिक रांझो जे का ज्या मालिकाओ तो बोरो थई शके त्या विश्वास तो थई शके अने त्या आधार होय तो जीवन जीवी शके तुम्हारा धन अने देवनी भक्ति नहीं कोई शका अने त्या हाटी माहो दुनियानी अंदर जीवन होता हाटी अगर प्रयत्न को हो तो ती या दुनियानी धन दौलत असे दृष्टिपात को हो प्रिय बहाबो हो पण तुम्हाला आखा मागता हूँ योग दिया योग शहर में फिरवलो હતો અને त्या शहर में माँ गाड़ी आगाड़ी योग रिक्शा जाई रोली आती त्या रिक्शा लिखना आता पैसा ही सब कुछ है कया के पैसा ही सब कुछ है आई खूब विचार को पैसा ही सब कुछ है तर अगर पैसा ही सब कुछ है पैसाच बाधा है तर पैसा कोई जीवन कहाँ नहीं खरीदी सकाय या मतलब है कि जाए का मारो को गरीब माँ हूँ अगर माँ पैसा नहीं है तर आई जीवन खरीदी नहीं सकूँ जाऊ खूब पैसा है जाऊ खूब धन दौलत है त्याल तो जीवन खरीदी सके का त्या पैसा है था पण देवे ई बाबत नहीं को ही प्रिय बहाबो है हालेलुया या दुनिया में सामान्य व्यक्ति भी जीवन प्राप्त कोई सके ई नियोजन देवे कोला है अने त्या हटीज वखत आपा गेले का यीशु ख्रिस्ते यहाँ आख्या का मार्ग सत्य ने जीवन आई ज है माँ आश्रय वगर तुम देवा पाए जाई शके नहीं अने त्या हटीज आज सवारना समय बीजा एक वचन आपा वांची लेना रहते ये प्रमाण आखे है पेलो करंथी त्या 15 अध्याय ने 50મી कलम पर्यंत आ वाँचता हूँ ये प्रमाण लखवामां आवेला है हवे भाईओ हूँ ए कहूँ छूँ
કે માંસ તથા રક્ત દેવના રાજ્યનો વારસો પામી શકતા નથી, તેમજ વિનાશીપણું અવિનાશીપણાનો વારસો પામનાર નથી. જુઓ, હું તમને એક રહસ્ય કહું છું. આપણે સર્વ ઊંઘીશું નહીં, પણ છેલ્લું રણશીંગડું વાગતા જ એક ક્ષણમાં આંખના પલકારામાં આપણ સર્વનું રૂપાંતર થઈ જશે. કેમ કે રણશીંગડું વાગશે અને મૂવેલા અવિનાશી થઈને ઉઠશે અને આપણું રૂપાંતર થશે. કેમ કે આ વિનાશને અવિનાશીપણું ધારણ કરવું પડશે અને આ મર્ત્યને અમરપણું ધારણ કરવું પડશે. જ્યારે આ અવિનાશીપણું ધારણ કરશે અને આ મર્ત્ય અમરપણું ધારણ કરશે, ત્યારે મરણ જયમાં ગરક થઈ ગયું છે એ લખેલી વાત પૂર્ણ થશે. અરે મરણ તારો જય ક્યાં? અરે મરણ તારો ડંખ ક્યાં? મરણનો ડંખ તો પાપ છે અને પાપનું સામર્થ્ય નિયમશાસ્ત્ર છે. પણ દેવ જે આપણું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા આપણને જય આપે છે તેને ધન્ય हो. हालेलुया. माहो या दुनिया में इस बाबत होती रोना है का या विनाशीपणाल अविनाशीपणु कह के प्राप्त उसमें या मर्त्य शरीराल अमर्त्य मतलब में जिन कदीज नहीं मोनारा तोड़ा जीवन कह के प्राप्त हो सके त्याल ये बेन शब्दों बहुत स्पष्ट लखવામાં એલા है. એ क्या है का विनाशी ने अविनाशपणु અને मर्त्य ने अमरपणु का जी मोनारा है ती अमरपणु कह के धारण कोई सके. आपे ते बुद्धि सीमित है, आप तो ओल्हो ज विचारते हैं का माहू मोया એટલે પોતી ગયા. નહીં પ્રિય બાબો, બાઇબલ સ્પષ્ટપણે આખે હે का એ જે મર્ત્ય શરીર હે તી શરીર અમરપણું ધારણ કો હોય, ती कदी ज नहीं मोनारा ओहना स्वरूप धारण को हो. ये स्पष्ट पुरावो पवित्र शास्त्र बाइबल में लखવામાં આવેલો है. અને ત્યાં હાટી જ એ નિયસને स्वतः प्रभु ख्रिस्ते कोया जो प्रभु ख्रिस्ताले माई टाकવામાં એનો અને કબરમાં દાટવામાં એનો અને દાટ્યા પહેલા પ્રભુ ખ્રિસ્તે યોગ સ્પષ્ટપણે વાત કોલી હતી કે આ ત્રીજે દિવસે જીવતો ઉઠી. અને એ ગોઠે જોવે કાંઈક ત્યાં વિરોધી લોકો વોનાયા તો ત્યાં કાંઈક હોયા કે ત્યાં ચોકીદાર થોઈ દેના, ત્યાં તાળો લાવી દેનો. યા હાટી કા ભાઈ तुम्हा ચોકી કોયા કહા કા ગમે તો જીવતો હોઈ શકે. ત્યાં બી મનની અંદર એક શંકા હતી, જે વ્યક્તિ મોલાલ જીવતે કોઈ દેને તો स्वतः કાને જીવતો હોઈ શકે. કાકા ત્યાં જે આખલા હે તી પોસિબલ હે, તી શક્ય બની. અને ત્યાં હાટી જ આપણે બહુ સ્પષ્ટપણે એ શકશે કે જોવે પ્રભુ ખ્રિસ્તના મરણ જાય ત્યાં કબરમાં થોવામાં એનો અને ત્યાં લખવામાં એલા હે કે ત્યાં પહેરો એટલે કે ત્યાં ચોકીદાર થોવામાં એના. અને જો આપા એ જે રવિવારની સવાર એટલે પુનરુત્થાનની પ્રભાતે ત્યાં લખવામાં એલા હે કે કાંઈક બાયો જોવે ત્યાં જાતી હો, મગદલાની મરિયમ ને ત્યાં જાતી હો અને એથી હો કે કબર તો ઉઘડી હે, ત્યાં તે પ્રભુ ખ્રિસ્ત નહીં હે. અને ત્યાં લખવામાં એલે પ્રમાણે જો રૂંબાળ હે ને प्रभु ख्रिस्ता मुनकाओ जो बांधलो रूंबाळ है ने त्याल काई कोई थोला तो खबर का गोड़ी कोई थोला तो. हालेलुया. या रहस्य खबर है का कहा तो गोड़ी कोई थोला तो तुम्हा ओटली मगर जहा तर ता मोठी होटल ठीक है वहानी होटल नहीं गोटकोडू काय 3 स्टार 4 स्टार का 5 स्टार होटल मगर तुम्हा जहा ता ओटला टेबल वय योक रूमाल थोलो रहे. ओके एक रूमाल तो रूमाल गोड़ी कोइन थोलो रहे, ये स्थिति में थोलो रहे. ओके गोड़ी कोइन थोलो कहे के थोलो रहे, गोड़ी कोइन थोलो रहे. अने त्या जोवे तो या हाटी त्या जोवे उपयोग हो जाए तो रूमाल एकदम खरवाई जाए. मतलब तो आज साफ कोरा हाटी अथवा तो अहीं त्या खा समय ती माहू अहीं त्या लागवी शके त्या बेन यूज कोई सकते हैं माहू. ठीक है, मोटा भागे माहू त्या अहीं उपयोग हो जेथी कन जे खाईनु खाते हैं ती खाईनु कपड़ा नहीं पड़े तो बगड़े ने त्या मूर्ति उपयोग हो. आमी जो रूंबाळ ता गोड़ी कोइन थोवलो है प्रभु ख्रिस्त मरण पाम्यो ने सजीवन जायो स्वतः प्रभु ख्रिस्ते तो रूंबाळ गोड़ी कोइन ता थोव्यो. या रहस्य ई है का आई पासो येनारो है. त्या रहस्य ई है का आई पासो येनारो है पूरो नहीं होई गयो. कहा का ओ अगर रूंबाळ चोंडरालो रहतो मतलब मैं पूरो हो गया. काय हो गया? पूरो हो गया. पण ओ रूंबाळ जो है गोड़ी कोइन थोलो है या मतलब है के का आई फरी पाछो येनारो है. यो अद्भुत आशा तुम्हें मा जीवन माटे ते उभी कोली प्रिय बापो. हालेलुया. अगर तो देव जीवे है के है के जाक्या का जो कोई व्यक्ति मा विश्वास करी तो मरी जाए तो भी तो काय कोरी जीवतो रहे. हालेलुया. અને ત્યાં હાટી સંત પાઉલ બહુ સ્પષ્ટપણે આખે કે એ જે શરીર હે ને એ શરીર અમરપણા ધારણ કરી. કાંઈ ધારણ કરી? અમરપણા. તે કદી જ મોનારા નહીં. રૂપાંતર પામલા એ શરીર
माँ जीवन में माँ शरीर अंदर कई पार्ट नहीं में ठीक है दाँत ना एम गुटगो ना है योके ठीक है आ घनी दाखनारो गुटकाड़नारो आँखों जोवे आ कबर में दाटाई जाए અને જોધી માં શરીર રૂપાંતર પમી તો ધીમાં ઓરિજિનલ દાંત બીરો માં ગુટગો બીરો હાલેલુયા હાલેલુયા કાકા તોમાં અધિકાર હે બોલો ડॉक्टर હે કાઢીને ફેંકી દેનો રે કાઈ મતલબ નહીં ત્યાં પણ તોમાં અધિકાર હે હાલેલુયા કાકા દેવી આખલા હે चाहे माँ समुद्र में पोड़ला रही चाहे केस भी तेल आगे में फेंकी देना रही चाहे ते जंगला में पोड़ला केस भी पोड़ला रही चाहे गबर में दाटला रही पेंती रूपांतरित पामी जो अगर प्रभु ख्रिस्त में विश्वास को होता हालेलुया ये जीवन अद्भुत रहस्य है प्रिय बहाबो जी जीवता देव प्रभु ख्रिस्त में विश्वास को होती हाटे अने ई चिंता जो प्रभु ख्रिस्त वातचीत करेला तो मार्था ने मरियम ते योकनो योक बहा लाजरस ત્યાં ગુમાવ્યો લાજરસ મરી ગયો તો એ ત્યાં ગોટકો મેલી હે ને ता मार्था प्रभु ख्रिस्त तारे गोटको होई ता लखोमा इल्लो है ती है आखे का प्रभु अगर तू रोतो ने तो माँ बहाना ही मोतो क्या आखे प्रभु तू अगर यही रोतो माँ शहरा माँ गो में माँ बहा बीमार जायो ने बीमार आतो तो तू अगर त्याल आखतो त्याटी प्रार्थना कहतो तो माँ बहा हारो हो जातो मरियम अथवा मार्था ये जो विश्वास है तो तोल्हा पुरतो सीमित है आजू ते देवा अद्भुत महान काम डोळे कोई नहीं देख्या तो वे कोवे देख्या जो वे लाजरस जीव तो जाए मतलब मैं प्रभु ख्रिस्त स्पष्ट आके है देखा त्या लखोमा एलो है योहन लखली सुवार्ता बहुत झड़पथी वांचता है कि हे योहन लखली सुवार्ता 11:21 कलम त्यारे मार्थाए यीशु ने कह્યું કે પ્રભુ જો તું અહીં હોત તો મારો ભાઈ મરત નહીં અને હજુ પણ તું દેવ પાસે જે કંઈ માગશે તે દેવ તને આપશે એ હું જાણું છું પાસે જા ઈસુ તને કહે છે કે તારો ભાઈ પાછો ઉઠશે માર્થા તેને કહે છે કે છેલ્લે દાડે પુનરુત્થાનમાં તે પાછો ઉઠશે હું જાણું છું તો છેલ્લે દી પુનરુત્થાન में उठी थी मान खबर है पण आम्ही ते मोई गोन 4 दी हो गया आम्ही शक्यता नहीं लागे मान तू अगर रोतो तो जीवतो आतो तोवे तो हारो हो जातो ई संभावना थी पासे यीशु तेल का आखे यीशुए तेने કહ્યું કે પુનરુત્થાન તથા જીવન હું છું मारा पर विश्वास करे छे ते जो के मरी जाए तो पण जीवतो थशे हालेलुया काय अद्भुत गोठ है अने जे कोई जीवे छे अने मारा पर विश्वास राखे छे ते कदी मरसे ज नहीं मरसे नहीं ज शू तू एवो विश्वास राखे छे हालेलुया कोली अद्भुत रहस्यमय गोठे है माहू कायम माटे जीवा हाटे जिंदगी में काई काई कोई टाकी दे काई काई तप जब कोई टाकी दे माहू गई काले मैं तुम्हारा गोटका लिया आई काशी शहर में आतो अने यो अघोरी बाबानी मुलाकात आमे आती अने त्याला मीणा गया त्या जा तो રહેઠાણ है तार होय आखी रूम माळा है कोण बोली है आखी रूम बोली है ओली मोटी मोटी माळा है त्या पाई का योक योक माळा जी है ती मरी मसाला बनाडली है इलायची नी माळा है लविंग नी माळा है ओली ओली जाड़ी अने आई है ता माँ को ता लांबी माळा मतलब मैं ता लाखों की संख्या में त्या गरम मसाला है ता त्या कोई ती माळा बनाडली है तो है क्या कहे का इमा प्राप्ति है इमा जप तप द्वारा मैं बाधा प्राप्त कोलो है माँ ई भव्यता है महानता है त्या मुळे मानी बाधा प्राप्त जायलो आखी रूम नी अंदर माहू एक जीवन रहस्य प्राप्त कोराहाटी अथवा तो जीवन त्याल प्राप्त उसमें त्याहाटी या प्रकारना जप तप कोता रहे तो बाबो है कि आखे मैं बाधंस प्राप्त को लेदला है इत्या मान्यता है ओके इत्या मान्यता है और तो काई जगह आमा मुलाकात कोई ना अने माहू काई काई नहीं कोई અને ત્યાં દેખીતી જે વસ્તુ है त्या द्वारा एक लागे का ई जी दुनियादारी वस्तु है ई दुनियादारी वस्तु मां हाटी जीवन लेती पण बाइबल है के आके का दुनियादारी ने काई भी वस्तु तुम्हें हाटी जीवन नहीं लेती है दुनिया में प्राप्त कोली वस्तु त्या हाटी योग माहू प्रभु ख्रिस्त में ये है अने है आखे का प्रभु तुमा बाल वाइक हुमजाड़ी दे मां वाइक जमीने बागे वाइक दे देरी मान यीशु ख्रिस्त है आखे का महा जीवन जी धनमय नहीं है आ याटी नहीं एल्लो है आई ते तुम्हारा जीवन रहस्य समझी सके त्या हाटी एल्लो है हालेलुया तुम्हारा जीवन रहस्य समझी सके त्या हाटी है
प्रॉपर्टी आज है काले नहीं है, ते तुम्हें हाथे મને જાતી રહેવાની है ત્યાંથી तुम्हें अगर यहाँ नीति नियम नीति वचनની અંદર કાંઈ ગોઠ્યો રાજા સુલેમાને લોકલી હત્યો, अगर माहू खूब कमावे है खूब कमावे है पेन त्या पोहो अगर भूंडो रहो तो त्या कमावेला प्रॉपर्टीनो कांई फायदो ना है क्या आखे नीति वचनની અંદર माहू खूब कमावे है पेन अगर त्याल पोहो होड़ो मिली गयो का ती बादो ज गुमावी दे तो त्या कमावेला कांई फायदो नहीं है। आज कांई परिवार याल तो दुखी होते हैं, काय आखते हैं आयो हा भो आमे पहाटी कमावते हैं, काय आखते हैं हमें पहाटी कमावते हैं, पर अगर पहुंच दुष्ट निंगिया बादी प्रॉपर्टी तुम्हें डोळा गाड़ी घुमावी दे तुम्हें काया खा, एक मुश्किलजनक बाबत है। या मतलब है कि जाया कि महा जे जीवन है ती प्रॉपर्टी में नहीं है અને ત્યાંથી જ બાબતનું રહસ્ય પ્રભુ ખ્રિસ્ત स्वतः तुम्हाल मान हुंजाड़ी रहे प्रिय बहा बोही। यीशु ख्रिस्त जो अधिकार है तो अधिकार ही जाहिर करता है, अगर तू थोड़ा विश्वास कोती मरियम मार्था तू एले अगर तू विश्वास कोती तर तू ए है तो का जो मोई जाए तो मतलब क्या आखे कोई मतलब અને જે કોઈ જીવે છે અને મારા પર વિશ્વાસ રાખે છે તે કદી મરશે નહીં જે આખે શું તું શું એ વિશ્વાસ કરે છે ઓ જો વિશ્વાસ है महाल जीवता जीव कोनु है कई कोनु है जो वे जीवे तो वे कोनु है मोई गया पास माहो विश्वास करी ती असंभव है। गई काल राती भी तुम्हाल मैं आखला कि माहो मोई जाए पास त्या मोक्ष ने माटे माहो प्रयत्न को है ती काई कामे रहे बाइबल आखे कहा का तुम्हें जी करनी है तुम्हें जी कर्म है तुम्हें जी काम है तुम्हें जी जीवन है ते जीवन जहाँ सुधी तुम्हारा जीवते हैं ता सुधी नो है मोरिया पास तुम्हारा थोड़ा ता रोवाना है कहीं एला कोवाना है ते या दुनिया नी अंदर काका देवे जी अमूल्य जिंदगी तुम्हार मान दिली प्रिय बाह बोही ई जीवता जीव तुम्हें ने माँ यो कहारा जीवन जीवना है। हालेलुया हालेलुया। तुम्हें त्या किंमत है अने त्या न्याय त्या करणी त्या जीवन अनुसार होनारा है અને ત્યાંથી પ્રત્યેક મહાલ હુમાજનું આવશ્યક है। કાકા દેવ પરમેશ્વર વચન है કે આખે કા દરેક મહાલ યોગથી દેવા આગળ ઊભો રા પડી કાઈ કોરા પડી દેવા આગળ ઊભો રા પડી દેવા આગળ દરેક મહાલ યોગથી હિસાબ દા પડી તું કોહા પ્રકારનો જીવન જીવ્યો કા જીવી તું તો પતિયેલ વિશ્વાસ રોઈ કા નહીં તો પત્નેલ તો વિશ્વાસ રહ્યો કા નહીં તો પહારે તો વ્યવહાર કહે કે રહ્યો अगर तो आड़स पड़स तो व्यवहार कह के रोयो तू लोला पता देना त्या तू काई विलवाट कोयो तू कोहड़ो व्यवहार कोयो तू कहा प्रकार जीवन जीव्यो तू बिजाटी कोलोहा काई कोया आए जोवे जेल में आतो तो तू मां मुलाकात ले दी आए जो भूख्या आतो तो तू मान खाई नो देनो आए जो निर्वस्त्र आतो मावे डोगले ने आते हैं तो तू मान डोगले देने जो आए पियो आतो तो तू मान पाई देनो है क्या आखे प्रभु तुलमाई कोई कोई मतलब ये तो मन खबर नहीं आती पास है क्या आखे जी तुझे वहाना माने त्याल कोला है ती तुझे काल कोला है मान कोला है। हालेलुया। जाल जरूरतमंद है योग दिहाई आमा गोरी आमा जयरुला आते हैं झालो भाई उतावल में आते हैं अने मन भाई अफसोस भी जाए दुख भी जाए आमा बाटे जयरुला आते हैं योग गांडी भाई बेचारी डोगले ने आते हैं अने मान भाई दुख लागी है ना गाड़ी एकदम ब्रेक भी मारियो पेन खूब उतावल आती पास आई भाई आगाड़ी लीधी गाड़ी ने खूब ट्राफिक भी आती मैं गोरिया लगता हूँ कहीं कपड़ा बपड़ा है क्या आखूँ एली बाइल वाइक डाकी देना आता पेन गाड़ी के सुबी रखी काई कोई वाइक आगाड़ी गाड़ी जहाँ देनी पास गोरिया की कामी कहीं कहीं कहो जे जो मैं ताने गाड़ी ले लीधी पास मैं गोरिया लोग शब्दों आख्यो मैं आखो जी वचन है ती आज आप पूरा नहीं कोई शक्य काका जो योग महाल आप निर्वस्त्र देखलो है आप डोगले नहीं पोवाड़िए या आप हारो नहीं को या मन दुख जाया जो कि ती भाई मानसिक रीते अस्थिर आती ती आई जाता है काई को काई खबर नहीं फिर मन में देवल में प्रार्थना कोई प्रभु योगता महाल उभो को जगह जी एटलीस्ट तेल डोगले पोवाड़ी सके। प्रिय बहा बोही या दुनिया में तुम आई जो जीवी रो लेते हैं અને ત્યાંથી જ પરમેશ્વરનું વચન સ્પષ્ટપણે है कि आखे का देवा जी भक्त नो मरण है देवा दृष्टि में कोड़ा है कीमती है। हालेलुया। त्या मूल्य ही है पोही रोशनी देवा गो घी अने बो
वहानी 14 वर्षनी वयमाय देवा गोगी थी। ये भी एक रहस्य है वो ले जा। प्रभु क्रिस्त है क्या आख्या क्या शिष्य हाल का अगर तुम्हारा स्वर्ग राज्य में जाना ही ने तो या वहाना पहाड़ों का बोना पड़े क्या क्या या वहाना पहाड़ों का तुम्हारा बोना पड़े एकदम निष्पात त्या मन में कहीं पाप रोय नहीं। आप बुद्ध हरिपेट जाते हैं आप आंकते हैं भी का पहुंच जुलाते हैं बेन गड़े 5 मिनट हम परी पास ही हार हो जाए एकठे हो जाए पर माहू मोटो माहू जुलायो ते आई मोई जाए पे नलर नहीं बोलो क्या कहे आई मोई जाए पे नहीं बोलो वो का स्वभाव है आपे जे माहू मोटे क्या स्वभाव है न त्याहाटी प्रभु क्रिस्त है क्या का तुम वहाना पहाड़ से या त्याहारों का मन तुम्हें रांझो से हालेलुया वहाना पहाड़ थी हिकना है ये दुनिया में जी गोठियो देवे उत्पन्न कोई हती हिका हाटी हती आपे हाटी हालेलुया वहानी वहानी गोठियो मारे हिका प्रिय बहा बहु जीवन खूब मोटा मोटा रहस्य देवे या दुनिया में थोवला है त्याहाटी प्रभु क्रिस्त आखे यहाँ लखली सुवार्ता 15 अध्याय में स्पष्टपणे लखवामां एला है का अगर तुम द्राक्षावेला में जाओ दी रहा ताऊ तुम काई दहा फल दहा अगर नहीं रहा तुम काई कहा उखाई जा काई कहा तुम उखाई जा ये रहस्य है वो आंबो है तुम्हारा खान टाकी दहा अच्छा त्याल थोड़ा मन तुम खान टाकी दहा तो फल देने बंद कोई दी अने त्या अगर बागीने डाळखी होत्यो त्या थोड़ा जोड़न नहीं हत्यो त्या हाटी तो मोई जाए अने फल दाटी काई काम न लागे त्या हाटी ती आगीम टाकाई जाए ती अने त्या हाटी आपे जीवन रहस्य समजो आवश्यक है प्रिय बापू जी देवा विश्वास रखे त्याल मोता बीक नहीं लगानु छे हालेलुया आई बीमार जाए तो आई मोराटी मतलब जो मोती आई वो हम तैयार था तो मानसिक रीते आई मन खातरी आती का मोहित देवा गौरव है हालेलुया दरेक महल खातरी रांझू से हाँ का नहीं त्याटी विश्वास कोते ना पा हाँ का पास बिया ही है माँ पोईरा कायोरी माँ दोनरा कायोरी माँ खेतीवाड़ी कायोरी माँ डोगरा कायोरी गावड़ा कायोरी कूँ दूध काढ़ी कूँ काई कोरी बोठो और टेंशन में रहेगा काई मोटा मोटा राजवाड़ा राज येना अने जाता रिया दुनिया में रोया नहीं त्या पे खूब प्रॉपर्टी आती बाधा जाता त्या पाए पण त्या येना ने या और जीवन नियम है अगर यह चिंता में आप जीवन जीव तो देवार कोधी आप चाली सको योग कोण योग संपूर्णपणे भरोसा युक्त जीवन विश्वास युक्त जीवन तो मैं जीवनो आवश्यक है प्रिय पछी मैं नवु आकाश तथा नवी पृथ्वी जोया केम के पहलो आकाश तथा पहली पृथ्वी जता रहेला छे अने समुद्र हवे छे ज नहीं वળી मैं पवित्र नगर नव यरूशलेम देवनी पासेथी आकाशमांथी उतरતું જોયું અને જેમ કન્યા પોતાના વરને સારું શણગારવામાં આવેલી હોય તેમ તે તૈયાર કરેલું હતું વળી મેં રાજસ્થાનમાંથી મોટી વાણી એમ બોલતી સાંભળી કે જુઓ દેવનો મંડપ માણસોની સાથે છે દેવ તેઓની સાથે વાસો કરશે તેઓ તેના લોકો થશે અને દેવ પોતે તેઓની સાથે રહીને તેઓનો દેવ થશે તે તેઓની આંખોમાંનું દરેક આંસુ લૂછી નાખશે મરણ ફરીથી થનાર નથી તેમજ શોક કે રુદન કે દુઃખ ફરીથી થનાર નથી પ્રથમની વાત તો જતી રહેલી છે હાલેલુયા ઓહણા जीवन जो जहेगा जहाँ बिल्कुल रोडनु नहीं है जहाँ मोहनु भी नहीं है अने जहाँ दुख भी नहीं है हालेलुया माहू याहाटी ते मेहनत कर रोला है दुनिया में आध्यात्मिक जीवन कहाँ माहू जीवे याहाटी जीवी रोला है पैसा कमाई तो सुख साहेबी मिली त्याल ओके अथवा कई काम धंधो हारो कोयलो री माहू मेहनत कोयली ते कदाच ती हारा गाँव में गाड़ी बोंगला में कई बीरोइन इरी फिरी सके पेन अगर जीवना तैयार नहीं कोली है आपे अनंत जीवन अगर तैयारी नहीं कोली है पोताना आत्माना माटे मेहनत नहीं कोली है तर पास ई वस्तु त्याल प्राप्त होनारी नहीं है या नगर में वसपाट कोनु है अगर जहाँ लिखवामा एला है कहता समुद्र भी नहीं कई भी नहीं है समुद्र नहीं है विशाल का समुद्र तुम्हारा खबर हो रही ये धरती खाली 25% है कोई टका है 75% पानी है पण ई नगर नी होड़ी बात कहमा एली है जे आकाश में होती है ना अने ए क्या आखे कहता समुद्र है तो पाई कैस नहीं पाए जरूर पड़ेगा हाँ
હોરગામ પાયા જરૂર પડી ગા હા તા ભૂખ બી નહીં લાગી અને પહી બી નહીં લાગી હાલેલુયા ઓહડી જિંદગી જો બિલકુલ મહેનત નહીં ઉનાળે તે વેંડલા હોતા પીતા હલો કે મને આમ હેળા પાઈ દેના ઠીક હે એરિયા ફ્રીજ બીજ में थोला कोली मेहनत कोनु हाँ खा हाटी पिया हाटी परसो पाण काई मेहनत कोनु माँ ये तो बिल्कुल बाद में फ्री में है काई ज मेहनत यो कुछ काम कौन हुए देवा आराधना कौन हुए हालेलुया यो कुछ काम है बाइबल आखे का यो कुछ काम है ता बीजा काई काम नहीं मिले कहा कहता लोग का देव खुद महारे रोई कई लोग लाए देव खुद महारे रोई कोली उत्तम गोठे कोली अद्भुत गोठे का देव खुद महारे रोई हालेलुया देवा आखिरकार ई ज इच्छा है का देव महारे रोई અને ત્યાંથી જ આખે એ ઓહડી જગ્યા હે જ્યાં નાઈ આંસુ હે નાઈ ભૂખ હે નાઈ પીહી હે ત્યાં લોકોમાં એલા હે કા નાઈ ત્યાં કાંઈ બી પ્રકારના દુઃખ હે અને પ્રિય બહાબો હે ત્યાંથી જ એ વાટ तुम्हान मैं पसंद को ले हालेलुया अगर ई जीवन तुम्हें में प्राप्त को ना है तो परमेश्वर ने वचन आखे है मार्ग सत्य ने जीवन जो देव है प्रभु क्रिस्त है त्या विश्वास को आवश्यक है हालेलुया त्याटी मार थायल प्रभु क्रिस्त आखे अगर तुम्हारा विश्वास कोती विश्वास कोई ले अगर ती मोई जाए ते भी ती जीवता हो रही અને ती कदी ज नहीं मोरी ये परमेश्वर ने वचन हालेलुया प्रभु आपार वचन हम जाटी सहायता कोई डोळा बंद कोते प्रार्थना कोते